Hi all, good evening. Let's start now. Is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So yesterday we started with the different constraints we have in SQL. हमने देखा not null क्या करता है and how to apply that not null constraint on a table while creating it or on an existing table as well. उसके बाद what exactly this not null does? It restricts the entry of null values.
दूसरा कौन सा कंस्ट्रेंट हमने डिस्कस किया कल? unique, यूनिक. एंड व्हाट इट डज? restrict allowed duplicate values. But here nulls are allowed. Allowed. Next we saw is your primary key constraint, which is nothing but not null plus unique. And this is used to identify that entity uniquely. Okay, and next we saw was this foreign key constraint, जो कि use होता है to define the relationship between pages. Okay, so yesterday we were talking about this student and course example. So student table है आपका, in which you have roll number, name and location field, and then you have this course field, जहाँ पे आपने आपके course के details सेव किए हैं. So you may have this course ID and course name. Now there are two ways to define a relationship between these two tables. एक हो सकता है कि आप इस रोल नंबर को यहाँ पे ऐड करिए and make it as foreign key here in your course table. Okay, so this roll number, define this as primary key over here, and this roll number define this as foreign key in the course table. But another way to relate these two tables is, instead of having this roll number field in course table to define a relation, हम क्या कर सकते हैं? We will add this course ID here in the student table, and then we will need to have only course ID and course name in the course table. So what will happen in that case? So if you have data something like this, roll number ये है, student name is this ABC, he is from Pune, course ID he is doing, course ID उसके लिए क्या है? 10 है. Now if I have to see 10 मतलब कौन सा कोर्स है, कौन सी टेबल चेक करनी पड़ेगी? This course table, wherein we will have 10 and here your data science. Okay, so both the ways we can relate these two tables. Okay, now in this particular case, what happens is we are using this course ID as foreign key here, whereas this course ID is the primary key of your course table. Okay, now you have another course which is 20 and SQL. Now the same student, this 101, if he is doing data science as well as SQL, it will have data like this: ABC, Pune, 20. Okay, any of these ways is possible to store your data. It is up to the data mapper how he or she wants to arrange the data into different database tables. Okay, तो इस केस में क्या होगा? We won't be able to insert any roll number value which is not there in your student table. कोर्स में हम ऐसा कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे जो स्टूडेंट में प्रेजेंट नहीं है. इन दिस केस व्हाट विल हैपन? We won't be able to insert any course ID which is not there in your course table. Okay, ये हो गया the relationship between two tables. Then we discussed कि we have one more table called faculty, wherein we have this faculty ID and name of salary, let's say.
This is the data we have. Okay. Now what I want to relate this table also to this course table. I want to save that information कि ये वाला जो कोर्स है that is being taken care by which faculty. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ID कॉलम को ऐड करना पड़ेगा. So here for this faculty table ID will be the primary key, and then sorry, this ID can be referred as foreign key here in your course table. Okay, so that's where we made a point that a table can have multiple foreign keys, which is not the case with your primary key. We can have only one primary key in a database table, whereas we can have multiple foreign keys according to our requirement, according to how we want to relate different tables in a database system. इसके अकॉर्डिंग आप जो है मल्टीपल फॉरेन कीज आपकी एक टेबल में हो सकती है. नाउ सेकेंड पॉइंट वी मेड यस्टरडे इज योर foreign key column can have duplicate values. In which type of relationship FK can have duplicate values? One to one. No, one to many. Okay, one to many relationship के case में your foreign key column can have duplicate values. So if you see here in this case, for example, not on it won't be the case कि सिर्फ एक ही student है जो data science का course कर रहा है. So we do have this one. Name, and she's also doing a data science course. Okay, what does that mean? Now one row of this course table is related to multiple rows of the student table. That is your one to many relationship. That is in respective of your course table. Course table का एक row is related to multiple rows of student table, one to many. और अगर student के perspective से अगर हम देखें तो that is your many to one relationship. यहाँ की multiple rows जो है यहाँ course table की single row को relate करती है. And that's why your foreign key column can have duplicate values in case of one to many relationship. Okay, so if you look at this particular example, so we have four different tables here: employee, department, manager, and project. Okay, can you look at these four tables and tell me which table is related to which table and what kind of relationship we have between them? First, employee table has a primary key as employee ID. Mm-hmm. Then managerial ID is connected to manager table, where it is primary key for manager table, and manager ID is connected to employee table's manager ID. Okay. And then department ID is connected to employees table department ID. So for this, it is a primary key, and for this is a foreign key. So department has a primary key called department ID, and it is foreign key for employee. Correct. So basically, if you talk about these two tables first, employee and department. So this department ID can be your primary key column, which we can refer to define this foreign key of your employee table. And now by looking at this data, can you tell me what kind of relationship is this? That is one to many. So manage department has one, and department ID in employee data has many, because it is has 10D two times. So there is duplicate, and D1 is also two times. Correct. So that is your one to many relationship. If you see, you have D1, D2, D3, D4 departments
in this department table, but this D1 is present twice for 2 rows in your employee table. So that is your one-to-many relationship between employee and department. Now, if you look at this manager table, how the data is stored? Again, this manager ID is the primary key of this manager table, which we can refer from this employee to define it as a foreign key. Okay, that's again your one-to-many relationship. One-to-many. One row of your manager table is related to multiple rows of your employee table. Now, lastly, we have this project table. Now, how we can relate this project table to three of the above tables? या फिर any of the above tables? So project name can be used because there is only one common thing. So project in project name is टीम मेंबर आईडी Yes. Project name आपका कोई भी टेबल में कॉमन नहीं है. Okay. The common column we have team. between these tables is this team member. मेंबर आईडी Look at the values. So again, जैसे हमने already discuss किया, कॉलम का नाम सेम होने की जरूरत नहीं है. We need to look for the values. Now, if you look at the values here in this team member ID, those values are your employee ID as well as these manager IDs. Correct? So, this table can have manager ID and employee ID as foreign key here. Correct? So, and again, what kind of relationship we have between employee and project? सेम टीम मेंबर Employee आईडी and One to many or many to one, we can say. So this particular employee is working on multiple projects here. So that's your one to many relationship. Now, if you check manager and project, what kind of relationship we have between these two? We have only one row M3, M4. That can be a one to one relationship. यहाँ का एक रो सिर्फ इस टेबल की सिर्फ एक रो से रिलेट करता है. So this way you need to understand your data and then last one is not able to understand because it is mix of employee ID and managerial ID, right? yes, So correct. when we are doing, then we have null values, null because if we go for only employee, a manager ID will be empty. And if we try to connect manager ID with this, so employee name, wherever the name employee name, it will be null values, right? We will have to join this table twice. एक बार आपको employee table और project table join करना पड़ेगा and second you will have to join manager and project. तो आपको ये सारी details मिलेंगी. We will talk about it जब हम join query लिखेंगे. I am going to take this example only joins के लिए, तो we will talk about it that time. Okay. Okay. अभी के लिए you can just consider or you can just understand that ये जो column है that is okay. This particular column we can define as foreign key, but two foreign keys. One is your this thing manager ID and one is your employee ID. Okay. I think that is not possible. ठीक है, क्योंकि we won't be able to define a foreign key. We can have two foreign keys. अगर एक और आपका यहाँ पे column होता, that is maybe anything जो भी नाम आपको देना है, manager ID, if that employee is
employee, normal employee, we will put that employee ID here. But if it is manager, we will give that value here in the separate column, and then only we can define two foreign keys here. One is your team member ID, sorry, this manager ID, and one is your employee ID. ठीक है? So Ma'am, can we consider like the employee must be under a manager, so that we have to convert employee to their managers, and then we get whole manager case when and then. So no, that I didn't get you. so we can consider like an employee is under manager only. Mm-hmm. So we have the employee corresponding manager ID. Mm-hmm. So I have to convert all the wherever their employee and convert corresponding manager, and it will get a column that is manager. Yeah, you can do that if you want to. I mean, it actually depends on the requirement, how we want to read that data in the output. Okay, we can consider that this E1 is under M1. So you can consider M1 over here, or you can use your case statement while reading the data. That is also possible. ठीक है, but basically अभी यहाँ पे आप जो है फॉरेन की इसको डिफाइन नहीं कर सकते. अभी ये प्रोजेक्ट टेबल में जिस तरीके से डेटा सेव किया गया है, यू कैन नॉट डिफाइन इट एज अ फॉरेन की एक्चुअली, बट still you have the relationship. This particular table is related to your manager table as well as to your employee table. Okay. Yes, got it. Okay, so that was all about foreign key constraint. Next constraint we saw, sorry, we need to see is your check constraint. Check constraint का use क्या होता है? What is the use of check constraint? Like a constraint to give the specific range for inputs. It's like 18, more than 18, we have a requirement. So you just put age should be more than 18. Or in between any range. Correct. So basically check constraint का use क्या है? It will make sure that whatever values we are inserting into a column, those values are satisfying the condition we have given. तो जो भी सारे conditions हम where clause के साथ लिख सकते हैं, all those conditions we can write along with this check constraint, and database DBMS will make sure that we are not breaking that rule. Whatever values we will insert, those values should follow or should satisfy the condition we have given. So let's understand how to apply this check constraint while creating a table. So create table, let's say employee check. I want to have all these columns, ID and name is there, let's say, and you have this employee age, which is again an integer value. Okay, and now I want to make sure that employee age जो है वो कभी भी आपका 25 से less नहीं होना चाहिए. So while inserting my data itself, I want to make sure that my employee age should always be greater than 25. So we will have to add this check constraint in this column definition here. So and say check employee age is greater than 25. Same way, if we have a gender field, char1 let's say, and we want to make sure that this gender should have only M and F values. इसके अलावा कोई भी value यहाँ पे insert नहीं होनी चाहिए. What we can do, we can again have this check constraint applied on this gender field and say check gender in either M or F. Okay, so let's create this table and we will try to insert data into this. Insert into employee check values. If you do, employee ID is this, employee name is this. Age, we will insert 30 for now, and gender value we will insert as F.
So we are actually inserting a valid record here. So select star from employee check. If we will do, that record is inserted in this table. Now let's try and insert a record wherein your employee age is less than 25. So it will throw you an error which says check constraint employee check is violated. Because हमने एक check लगाया है, एक condition लगाई है इस field पे, which says that your employee age field should always be greater than 25. Same way, अगर आप यहाँ पे gender की कॉलम में F और M के अलावा कोई वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करें, it will give you an error for the second constraint. So if you see employee check 1 is violated, it says in case of employee age check constraint, and it says check 2 is violated in case of check constraint we have on this gender field. So basically where clause क्या करता है, already जो data है उसमें से हमारी condition को satisfy करने वाला data हम read कर पाते हैं या access कर पाते हैं, but this check constraints makes sure that we will not be able to insert such values itself जो इस rule को break करती हो. Okay, so as we have already discussed, you can think of any drop down list you have on different web forms. तो वहां पे क्या होता है, limited options if you have to give for a user to insert a value in that particular API, in that particular field, you can have this check constraint applied on the back end or at the database level. Now same कंस्ट्रेंट अगर हमें एग्जिस्टिंग टेबल पे अप्लाई करना है, so you have this student table here and now we want to make sure that एड्रेस का वैल्यू जो है वो पुणे और मुंबई के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए. So what query we will write, alter table, your table name, modify column, address, varchar 20 maybe, and say check address in पुणे और मुंबई. ओके, सेम वे जैसे हमने जेंडर के लिए MNF बोला है वैसे ही यहाँ पे भी व्हाट वी आर सेइंग इज एड्रेस जो है, एड्रेस का वैल्यू जो है वो पुणे और मुंबई के अलावा कहीं कोई भी नहीं होना चाहिए. सो इफ आई हैव माय ब्रांच ओनली इन पुणे एंड मुंबई, आई वांट all of my students to insert either of these values when they are selecting a location for the class. ठीक है, so that's how your check constraint behaves. Now how to drop this constraint is, the syntax for dropping a constraint will be alter table, your table name, drop constraint, and here you need to give a constraint name. Okay, now where to find this constraint name? So if you see, when we try to insert this record, we had got an error which said check constraint employee check underscore check 1 is violated. So this is nothing but the constraint name. We can also explicitly give names to these constraints. So there is little different syntax. आप लोग चेक कर सकते हो, थोड़ा सा अलग सिंटैक्स होगा अगर आप मैन्युअली या एक्सप्लिसिटली इन कंस्ट्रेंट्स को नाम देना चाहते हो तो. बट इफ यू आर नॉट गिविंग names to these constraints explicitly, we can still get those names from the create table definition. Where are we adding the constraints? We are adding it in create table statement only. So if you'll go and check this create table statement of employee check table, you will be able to get the constraint name. Okay, and this name will help you drop this check constraint from a table. So alter table student employee check drop constraint
and this constraint. Okay, so this way this query will help you drop this particular constraint. Check constraint को remove करने के लिए this is the syntax you have to use. Show create table run करेंगे तो आपको ये constraint का नाम मिल जाएगा. So I'll just write it over here कि to get the constraint, and this is to remove the check constraint. Okay, so that is the check constraint we have in SQL. Next है आपका default. We didn't see this default constraint yesterday, ना? कल हमने नहीं देखा था ये वाला constraint. नहीं तो default constraint का मतलब क्या होता है? It simply it is used to set a default value for a column. किसी भी column में अगर आप explicitly data insert नहीं करते हैं, आपके insert statement से आप वहां पे value insert नहीं कर रहे हैं, database क्या populate करता है हमने देखा, it populates null by default, right? But अगर मुझे वो null नहीं चाहिए, I do not want to see any null values in that particular column, what I can do is I can set a default value so that अगर मैं कोई value उस column के लिए insert नहीं कर रही हूँ, database will populate that default value instead of the default null. So right now, if you will describe this student table we have, so it doesn't have default value for any of these fields. So whatever default value we will set, that will be visible here. Now let's understand how to set a default value for a column while creating a table itself. Okay, create table, let's say employee df lt, and you want to have all these columns varchar 20, and then I want to have a project column for this table, which is again your varchar 20 varchar 20. Abhi, what I want to make sure is अगर employee already project को tag किया गया है, I will have that project related information and I'll insert that data. But अगर नहीं है, if that person is not tagged to a project, I won't be having that value with me. और अगर मैं value insert नहीं करूंगी, database क्या populate करेगा? It will populate null. So I do not want to see null. Instead, I want to see value as bench for all the employees who are not tagged to a project yet. So what we will have to do is we will simply add this default constraint to your column definition and say default value should be this bench. Okay. Same way, एक और column अगर आपका है, location column you have, and you want to set a default value for this location as Pune. So if this table, if all the employees of this particular table belongs to Pune location, हमें पता है कि वो table जो है उसमें सिर्फ Pune location के employees का data saved है. But somebody who is reading that data, he or she won't be able to understand कि ये data जो है वो Pune location के employees का है, and that's where we will have to have a column in your table which has this value, location value stored. Okay, but I do not want to insert it separately for each of the employees I'm going to insert. Instead, I'll just put a default value for that field. Now let's describe this employee DFLT table. Can you see? दोनों ही column के लिए default value is displayed. So if you see in दो columns के लिए what it says, default value is null. But क्योंकि हमने इन दो columns के लिए अलग से एक default value set किया है, that value is being shown here. Project के लिए default value is bench and location के लिए default value is Pune. Now let's try and insert a record into this. Insert into employee PFLT values.
let's insert all the values for the first record. So 1001, employee name, project she is working on is this, and location is this. Okay. तो ये वाला record आपका it will look something this. Select start from employee DFLT अगर आप करोगे तो this particular record has both the values, project का नाम भी है और location का भी एक value अलग से दिया हुआ है. But now what if I'll insert only employee ID and e-name to the table 1002, let's say. E-name and let's remove both of these values. अभी ऐसे डेटा को अभी तक जब हमने इंसर्ट किया what happened? प्रोजेक्ट और लोकेशन फील्ड में क्या पॉपुलेट हुआ था? डेटाबेस पॉपुलेटेड null. Okay, but now if you'll execute this insert statement and see the data we have in this employee default table, can we see project का नाम अभी क्या आ रहा है? Bench. Location का नाम what it is coming as? It is Pune. Okay, because the default value we have for these two columns is bench and Pune. तो explicitly अगर आप किसी भी record के साथ इन columns के लिए value को insert नहीं करेंगे तो it won't be populated as null ever. It will always have these default values populated. Okay, that is your default constraint. If you have to apply this constraint on an existing table, the query you need to write is this thing, alter table, your table name, that is okay, student table में which all columns we have. Okay, we can again set a default value for this address field. So the query we need to write is alter table name, modify your column name or column address. जो भी column आपको modify करना है, its data type which is varchar 20 and say default to Pune. सेम चीज जो हमने क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में लिखी है, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड डिफॉल्ट कीवर्ड एंड द वैल्यू, द डिफॉल्ट वैल्यू. सेम थिंग वी आर डूइंग हियर एज वेल बट ओनली विद द अल्टर टेबल स्टेटमेंट, क्योंकि आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल पे ये कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर रहे हैं. नाउ इफ आई गो एंड डिस्क्राइब द स्टूडेंट टेबल, इट विल आल्सो हैव दिस डिफॉल्ट वैल्यू set for this address field. And to remove this default constraint, the query we need to use is alter table student, that is your table name. The keyword we need to use to drop this default constraint from a table is alter. यहाँ पे modify नहीं, alter is the keyword we need to use and say alter address and just say drop default. जो भी कॉलम से आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू हटानी है, that column name, alter that column name and say drop this default value. Now once we will execute this and describe our student table, the default value is gone from here. Okay, same way अगर इस एम्प्लॉय डीएफएलटी टेबल के लोकेशन फील्ड का डिफॉल्ट वैल्यू रिमूव करना है तो हमारा क्वेरी क्या होगा? alter table employee DFLT alter location varchar 20 and say drop default. Sorry, no need to give a data type. Okay, just column name and say drop default. Okay, so this is how you can apply a default constraint and you can also remove it with the help of this query here. Last अगर constraint, दोनों एक साथ ड्रॉप करना हो तो let's try this out. Key alter, which is another column we had default value set on project.
सेम वे जैसे हमने ऐड कॉलम मॉडिफाई कॉलम किया था वैसे ही. Okay, Okay. I'll keep it as it is here. Now, next constraint we have to see is this auto increment constraint, and it helps you increment a column value by 1. किसी भी column की value को अगर 1 से increment करवाना है तो we can make use of this auto increment constraint. Let's understand how to apply this while creating a table. So create table employee C, let's see, and we want to have this employee ID, and let's just have two columns over here, employee ID and employee name. Okay, अभी हमें क्या करना है, employee ID field को auto increment करवाना है. I do not want to insert these values explicitly for each of the employee. I just want to keep auto incrementing it. So we have to add this auto increment keyword here in your column definition. Now if I try to execute this, it will give you an error, and that error says incorrect table definition. There can be only one auto column and it must be defined as a key. तो आपकी टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो सकता है जिसे आप ऑटो इंक्रीमेंट करवा सकते हो, and it must be defined as a key. So let's define this as primary key also and execute it now. So it will get created. Now if you go and try to insert data into this table, so let's insert very first record, but we will just give an value for e-name here. Okay, सिर्फ e-name का value हम देंगे anything. ठीक है, execute this and read the data of this employee EUC table now. What is the value populated in employee ID field? 1. क्योंकि हमने क्या बोला है, this particular column should be auto incremented. इसके बाद अगर आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो एम्प्लॉय आईडी क्या पॉपुलेट होगा, इट विल बी पॉपुलेटेड 2. सो बाय डिफॉल्ट जो भी कॉलम को हमने ऑटो इंक्रीमेंट करवाया है, बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट विथ 1 and it will increment by 1. Okay, but we cannot change the incremented value, that means or you can say the step size. वो by default 1 से ही increment होगा हर एक record के लिए, but we can anytime change the start value of it. Okay, so there are two ways to change the start value of your auto increment field. एक तरीका हो सकता है कि you insert your first record with whatever value you want to start your employee IDs with. So employee ID, I want to start it with 1001. So insert this first record explicitly or manually, we can say 1001. अभी इसके बाद जो भी डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, सॉरी, ओके, 1001 1002 हमने मैन्युअली इंसर्ट किया. ओके, देयर इज नो नीड टू इंसर्ट 2 रिकॉर्ड्स मैन्युअली, सिर्फ पहला वाला रिकॉर्ड आप मैन्युअली इंसर्ट करोगे, एंड देन if you will insert this third record and have only employee name for it, you will see that employee ID will be populated as 1003. Okay, तो स्टार्ट वैल्यू अगर 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला वाला जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं, we can insert this employee ID manually for the very first record, and then उसके बाद जो भी records आप insert करोगे, employee IDs will keep incrementing from that value. And another way is to change your start value of auto incremented column is to run this alter table statement. So alter table employee DFLT and just say auto increment is equals to
10,000. Okay, and now if you go and insert this record, AUC मैम, sorry, हाँ हाँ एम्प्लॉय AUC. हाँ, ओके, एम्प्लॉय AUC में हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया, फिर भी इट इज नॉट टेकिंग दिस ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू. 1 सेकेंड, 100. हाँ, ऊपर के जो स्क्रिप्ट कीजिए ना क्वेरीज रन करना पड़ेगा ना मैडम, ऊपर वाली क्वेरीज रन करना पड़ेगा ना. क्या रन, कौन सा रन करना पड़ेगा वैसे ही? तो इंसर्ट लास्ट इनटू वाला क्वेरी आप लास्ट वाला क्वेरी ना फिर से मैम हमने run अल्टर करने करके के उसके बाद कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं ना. हो गया, हाँ हाँ, सॉरी, आई थॉट आई रैन इट. ठीक है, तो ये वाला जब हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, व्हाट इज द एम्प्लॉय आईडी पॉपुलेटेड हियर, 10,000. अभी इसके बाद एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी क्या पॉपुलेट होगा, 10,001. ओके, प्रोवाइडेड ओनली थिंग इज, आपने अगर ये वाला रिकॉर्ड पहले इंसर्ट किया है and now you are trying to change your default start value. So if you already have an employee ID 1001, you cannot change your start value to any value less than 1001. तो अगर आप यहाँ पे 100 बोलोगे तो it won't work. Okay, because now that is something. Okay, now if you say 100 and okay, what is happening, अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर रहे हो तो भी क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडीज आर स्टिल पॉपुलेटेड एज 2 3 लाइक दैट, 10,001 2 3. ठीक है, सो इफ यू हैव स्टार्टेड योर वैल्यू with 1 and then you want to alter it, you want to alter your table to change the auto increment value, it should be greater than whatever the employee IDs you have in your table. It cannot be less. Understood this point? समझ में आया क्या? अभी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, लेटेस्ट एम्प्लॉय आईडी क्या है, 10,003 है. पहले हमने क्या बोला है, ऑटो इंक्रीमेंट का स्टार्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 10,000 होना, सॉरी 1001 होना चाहिए. ये मैन्युअली डेटा को हमने इंसर्ट किया एंड देन वी ट्राई टू रन दिस ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट एंड नाउ वी आर सेइंग कि ऑटो इंक्रीमेंट का स्टार्ट वैल्यू जो है वो 100 हो, which is less than this value, so it won't allow. So this alter table statement will not give you any error, but आप डेटा को इंसर्ट करोगे तो वो इसके नेक्स्ट वाली ही वैल्यू पिक करेगा. इट वोंट स्टार्ट फ्रॉम 100 नाउ. अदरवाइज क्या होगा, यू हैव दिस 10,003 और उसके बाद वाले रिकॉर्ड का एम्प्लॉय आईडी क्या पॉपुलेट होगा, 100, विच वोंट लुक करेक्ट, विच इज नॉट द करेक्ट डेटा, राइट. अगर ये नेक्स्ट एम्प्लॉय इसके बाद आया है तो इट शुड हैव समथिंग, एनी एम्प्लॉय आईडी विच इज ग्रेटर देन द अर्लियर एम्प्लॉय. ओके, सो दैट इज योर ऑटो इन्क्रीमेंट. एक्सक्यूज मी मॅम, म्हणजे जे लास्टला ऑटो इन्क्रीमेंटची व्हॅल्यू दिली आहे तर त्याच्यापेक्षा ग्रेटर व्हॅल्यूज आपण नंतर देऊ शकतो, त्याच्यापेक्षा लेस व्हॅल्यू आपण नाही देऊ शकत, राईट? बरोबर. It means कि it checks the latest auto increment value and not the starting one. Like here in this case, it won't check with 1001. Instead, it check with 10,000, right now? हाँ, करेक्ट, ठीक है. स्टार्ट वैल्यू वी ऑल्सो हैव 1, ठीक है. इट वोंट गो एंड चेक फॉर 1 or 1,000, it will check for 10,000. Latest auto increment. Latest one. Yeah. Okay. So let's summarize all the constraints quickly. Not null हमने देखा, which does not allow null values, and you can have n number of columns with this not null constraint applied on them. Okay, n number of columns या फिर multiple columns पे आप जो है ये not null constraint apply कर सकते हो according to your use. And the way to implement this constraint on a table is to add not null keyword in your
कॉलम डेफिनेशन। तो वो नॉट नल कंस्ट्रेंट आप टेबल को क्रिएट करते टाइम भी अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी एग्जिस्टिंग टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर अल्टर टेबल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हमने देखा यूनिक कंस्ट्रेंट विच डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट values. Okay, again we can have n number of unique keys in a table. एक टेबल में मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती हैं। उसके लिए हमें सिर्फ उन सारे कॉलम्स में जिन्हें भी हमें यूनिक की बनाना है उन सारे कॉलम्स की डेफिनेशन में वी हैव टू ऐड दिस यूनिक कीवर्ड so that all those columns will not accept any duplicate values. But here multiple null values are allowed क्योंकि एक null को आप दूसरे null के equivalent consider नहीं कर सकते। Next constraint we saw is this primary key. Okay, not null plus unique, and we can have only one primary key in a single database table. एक table में सिर्फ एक ही primary key आपका हो सकता है। Next constraint we saw is this foreign key, which is what we can say is define a relation between tables by referring to the primary key column of another table. Okay, so foreign key is something. To define your foreign key, what we do is we refer the values of primary key of another database table we have. That is basically a foreign key, and whenever we have primary and foreign key relationships, database makes sure that your data is consistent throughout the tables. That means प्राइमरी की कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं उसमें से ही कोई वैल्यूज आप आपकी फॉरेन की कॉलम में ऐड कर सकते हो, उसी से रिलेटेड डेटा आप आपकी चाइल्ड टेबल में ऐड कर सकते हो। सेकेंड थिंग वी डिस्कस्ड अबाउट फॉरेन की इज दैट ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड कीवर्ड्स। ऑन डिलीट कास्केड क्या करता है, अगर आप पेरेंट से कुछ डिलीट करते हो तो दैट डिलीशन विल बी रिफ्लेक्टेड टू ऑल द रिलेटेड चाइल्ड टेबल्स यू हैव। एंड ऑन अपडेट कास्केड क्या करता है, इट reflects or it cascades all the updates you have on your parent table to all the related child tables. Okay, next important point about foreign keys is you can have multiple foreign keys in a single table in case a table is related to multiple parent tables. Secondly, you can also have duplicate values in a foreign key column in case of your one-to-many relationship. That is your foreign key. Next constraint we saw is this check, जो कि condition. It checks for a condition before you insert your data into a database table. Next हमने देखा this default constraint. मैडम हेलो, Yes. ये चेक हम मल्टीपल कॉलम्स को भी लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। ओके, चेक कंस्ट्रेंट हमने लगाया, राइट? वी अप्लाइड दिस चेक कंस्ट्रेंट ऑन जेंडर एज वेल एज आई गेस दिस एज। लेकिन ड्रॉप करने के लिए अलग मेथड है क्या कुछ, अगर दोनों का भी ड्रॉप करना है तो? यू कैन हैव दिस ऑल्सो ड्रॉप कंस्ट्रेंट और दूसरे कंस्ट्रेंट का नाम दैट इज व्हाट वाज, this is also valid. Okay. Okay. मैम वो explicitly हमको अगर नेम देना होगा वो नहीं बताया। Okay, I haven't told this because it will create unnecessary confusion. ठीक है, सिमिलर सिंटैक्स है, मैं एक बार सिंटैक्स आपको दूंगी, ये एक बार मेरा समरी खत्म होने दो, ठीक है? सो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है वो आपको हेल्प करेगा टू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। हमने अभी अभी देखा कि बाय डिफॉल्ट डेटाबेस नल पॉपुलेट करता है, नल नहीं चाहिए तो वी कैन सेट अ डिफरेंट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम्स ऑफ योर टेबल। अगेन डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी जो है वो आप मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हो।
And lastly, we saw this auto increment, which helps you increment a column value by 1. Start by default, it starts with 1, and it is mandatory to define an auto increment column as a key. Okay, the सिर्फ auto increment keyword से नहीं होगा, it won't help you, we won't be able to create that table definition. It is mandatory to define that column as key, and then only we can auto increment it. Okay, now if you have to give an explicit name to your constraint, so uske liye the syntax you need to use is create table, let's say employee 1, in which you want to have, I'll give you the syntax. Table name, column 1 data type, column 2 data type. ओके, तो ये आपकी टेबल है. अभी हमें क्या करना है, इस कॉलम 1 को आपको आपकी टेबल का प्राइमरी की डिफाइन करना है. सो द सिंटैक्स वुड बी कॉमा constraint. Here you will have your constraint name. That can be anything. It is altogether a user defined thing. उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, employee pk, any name you can give, only pk, whatever. ठीक है, and then you need to use this keyword, that is primary key, and you need to give this column 1. This way you can give an explicit name to the constraint. तो अभी अगर इसके लिए query हमें लिखना है, तो आपका query क्या होगा, create table employee 1, let's say employee id I want to have as integer, ename as varchar 10, and now we need to define this employee id as the primary key again, but उसे हमें अलग से नाम देना है. So constraint, let's say my pk primary key, that is your employee id. Okay, so this my pk is the constraint name here. Understood? Same way, same आपका syntax रहेगा to give a name to all the constraints we have seen. ओके अभी हमने ये जो सिंटैक्स हमने यूज किया, वहां पे हमने क्या किया, जो भी कॉलम डेफिनेशन था उसी में वी एडेड दोस कंस्ट्रेंट्स, करेक्ट. बट अगर आप उस कंस्ट्रेंट को अलग से नाम देना चाहते हो, तो यू नीड टू add a comma, or you can say you need to have this particular format after a comma in your table definition. जो भी columns आपको add करने हो, सारे columns, and then add this constraint using this particular syntax. अगर और भी कंस्ट्रेंट हमको मतलब लिखने होंगे तो फिर दोबारा से कंस्ट्रेंट ये जो लिखा है हाँ हाँ यस, हर एक वापस से लिखना पड़ेगा. इसके बाद you will have to do it like this. Let's say कुछ आपको foreign key define करना है. foreign key, जो भी आपको कॉलम का नाम देना है. ओके, आई डू नॉट हैव एन एग्जांपल नाउ, बट ठीक है, आई कीप समथिंग रेफरेंसेस. प्रोजेक्ट टेबल का प्रोजेक्ट आईडी. ओके, दिस वे यू हैव टू गिव, क्या कहते हैं, अंडरस्टूड. I won't be able to create this table क्योंकि हमारे पास ऐसा project table created नहीं है. We do not have this reference table, but this would be the syntax. अगर multiple constraints आपको एक ही table में implement करना है तो. Okay. So that was all about. मैम तो ये प्रोजेक्ट PROG जो टेबल है वो बन जाएगा और फिर उसका जो प्रोजेक्ट आईडी फील्ड है वो No. I have just given this, I mean, given this example to कंसीडर किया.
हाँ project हाँ table has configure that. किया मैंने, बस इसीलिए आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग दिस ना. इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस इट विल थ्रो अस एन एरर. एक तो पहला एरर आया है आपको एम्प्लॉय वन ऑलरेडी एग्जिस्ट. इसको अगर आप चेंज भी करोगे तो व्हाट इज द एरर इट इज गिविंग? प्रोजेक्ट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द टेबल. ओके, तो ऐसी कोई टेबल नहीं है एंड यू डू नॉट हैव दैट कॉलम आल्सो. Okay. दैट इज फाइन. ठीक है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि अगर आपको एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स एक टेबल में ऐड करने हैं तो यू नीड टू यूज दिस सिंटैक्स. ठीक है, आई जस्ट राइट अ नोट, वन नोट, syntax to add multiple constraints with user defined things. Okay. Better I will write it here. So this my pk and my fk are the constraint names. Again, these names can be anything according to your choice, but yeah, this is the syntax. Okay. So this was all about the constraints we have in SQL. Next हमने देखना है, okay, तो अभी तक हमने देखा how to store your data and how to manage it. We saw how to manage your data with the help of different constraints, how to keep it clean, consistent and secure in your database table. ठीक है, that is because of these constraints, these rules we can apply in SQL or in your DBMS. Now we will need to understand how can we read our data in different ways. डेटा को अलग अलग तरीके से रीड कैसे करते हैं, उसके लिए what do we have in SQL is different clauses. So these clauses actually helps us retrieve a set of records. सो डिफरेंट क्लॉजेस एसक्यूएल में हमें हेल्प करेंगे डेटा को अलग अलग तरीके से रीड करने में. एंड व्हेन आई से अलग अलग तरीके से, आई मे वांट टू सी दैट डेटा सॉर्टेड इन सम ऑर्डर. I may want to divide my data into groups and then calculate some value separately for each of the groups I have. या फिर हो सकता है कि आपको किसी कॉलम के यूनिक वैल्यूज देखने हैं, या फिर हो सकता है कि यू डू नॉट हैव एनी कंडीशन बट यू डू नॉट वांट टू सी द एंटायर डेटा आल्सो. आपको सिर्फ सैंपल रिकॉर्ड्स देखने हैं. You have to read data from multiple tables. All these things we can do with the help of, और one more thing कि आपको अगर मल्टीपल आउटपुट्स को कंबाइन करना है, अपेंड करना है, so all these things can be done with the help of different clauses we have in SQL. And the very first clause we need to discuss is your order by clause. Okay, now whatever SQL you have understood till now, based on that, can anyone tell me what can be the use of this order by clause here? By looking at its name, can anyone tell me who doesn't know SQL already? वो बता सकते हैं क्या कि इसका यूज क्या हो सकता है? ए टू जेड सॉर्ट करेगा क्या? Yes. Okay, so this order by clause, order by, so what we are trying to do, we are trying to change the order of records we are having in our output. So this order by clause is used to sort the data in the output, sort the data from your table. Now when you write this particular query, that is select star from employee, in which order we are reading this data? जो भी ऑर्डर में हमने डेटा को इंसर्ट किया है उस ऑर्डर में वी आर रीडिंग दिस हियर. नाउ व्हाट इफ आई हैव टू sort these records based on the salary values? Okay,
I want to see the result in sorted order of salary values these employees have. So what we have to do is we have to use this order by clause. Now, where to add this order by clause in a query? अभी हमें हमारा रिजल्ट कहाँ पे मिल रहा है? We are getting our result at this point, right? इतना क्वेरी लिखने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिला है, that result set we want to sort, right? And that is why your order by clause will always be at the end of your query. So in this case, it is just after the table name, but बेसिकली ऑर्डर बाय क्लॉज हम कहाँ पे ऐड करेंगे? जहां पे भी, जिस भी पॉइंट पे यू आर गेटिंग योर रिक्वायर्ड आउटपुट, जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है उस रिजल्ट को हमें सॉर्ट करना है, एंड दैट इज व्हाई ऑर्डर बाय क्लॉज आपका हमेशा जो है एंड में आएगा. ओके, सो वी कैन हैव ओनली वन क्लॉज आफ्टर ऑर्डर बाय क्लॉज. वी विल टॉक अबाउट इट, बट otherwise order by will always be at the end of your query. Now when we have added this order by clause in the query, can you see the records are now sorted in ascending order of your salary values? 2000 is the minimum one and 10,000 is the maximum one. Okay, so by default ये जो order by clause है, the default sort order is, can we say the default sort order is ascending? Yes, ma'am. किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है वो अगर आप नहीं लिखते हो, सॉरी, तो data will be sorted in ascending order of the values you have in this particular column. You can also specify this keyword called ASC to sort the data in ascending order. ऐसे भी आप लिख सकते हो. That also means basically both of these queries will help you sort in ascending order. This will also help you sort in ascending order. So whenever we are not specifying the order in which we want to sort the data, तो भी क्या हो रहा है, डेटा आपका ascending order में sort हो रहा है, and that is why we said that the default sort order is ascending. Now what if I have to sort this data in descending order of salary values? We will have to use one more keyword here after your column name, which is DESC. Okay, I want to sort my records based on salary values, but what order I want to keep? I want to keep a descending order for this. Okay, so if we'll execute this, we can see now the records are sorted in descending order of the salary values we have. Okay, now this keyword is same for two things. DESC. What is the another use of this DESC keyword we have? Describe. Correct. Okay, so this DESC table name will help you describe a table, and if you are using it with your order by clause, it will help you sort the data in descending. Okay, तो आप इसे कहाँ पे यूज करते हो उस पर डिपेंड करेगा हाउ इट बिहेव्स. ओके, नाउ इन तीनों क्वेरीज में हमने क्या किया है, डेटा को सिर्फ एक कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट किया है. नाउ व्हाट इफ आई हैव टू सॉर्ट माय डेटा फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नेम्स. Okay, first of all, let's see the output, what kind of output we will get if we will sort our data based on department name values. So order by department name. So if you see, we have all the records from admin first, then finance, then HR, and then IT. But if you look at the salary values, these salary values are not sorted for these departments. Okay, तो अभी हमें क्या करना है, I want to sort my data based on departments first. अभी और ये जो departments हैं, उन departments का salary भी जो है वो sorted होना चाहिए. Okay, so what you have to do is, so in other words, you want to sort your data based on two different columns. पहले इस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट हो, एंड वंस we get that output, I want to sort that result set based on the
salary values also. Now if you see admin के ये 4 records देखेंगे तो salary values are also now sorted. Your records are sorted according to these salary values as well, 2004, 4 and 5. Then if you come to this 556565 for finance, HR के लिए minimum salary है आपका 3000 और जो भी incremented salaries हैं वो उसके according sort हो जाएंगे. Okay, this way you can have n number of columns in your order by clause. हेलो अब एक बार दोबारा बता देंगे कैसे वर्क किया. ओके हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक कॉलम के बेसिस पे हम हमारा डेटा सॉर्ट कर रहे हैं. ओके, दिस इज फाइन, करेक्ट. यस मैम. अभी यहाँ पे जो है हमारे रिकॉर्ड्स सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे सॉर्ट हुए हैं. दैट इज व्हाई वी हैव एडमिन, देन फाइनेंस, देन एचआर एंड देन आईटी. बट सैलरी वैल्यूज को अगर आप देखो, क्योंकि हमने इस पे सॉर्ट नहीं किया है अभी भी, तो डेटाबेस ने सिर्फ क्या किया, एडमिन के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो टॉप में लिए, देन फाइनेंस, देन एचआर एंड देन आईटी. बट अभी मुझे क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन रिकॉर्ड्स को भी मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में रीड करना है बेस्ड ऑन द salary values. I do not want to see this 4000 as the first record in my output. I want to see this 2000, admin 2000 in as the first record in my output. Then admin 4000 वाले दो records and lastly admin 5000. So basically अभी मेरा requirement क्या है, मुझे सिर्फ एक कॉलम पे डेटा को सॉर्ट करके नहीं होगा. I want to sort my data based on 2 different columns, department ID as well as the salary values. तो ऐसे उसके लिए we can just add multiple column names in your order by clause this way. Okay, जितने भी columns के basis पे आपको डेटा को sort करना है, all those columns can be added using a comma here in your order by clause. Now it's not necessary कि अगर आप एक से ज्यादा columns को add कर रहे हैं तो either both of them should be ascending or both of them should be descending. You can have any order. So department name ascending रखेंगे and we will sort the salary values in descending order. So that is also possible. So now if you see, admin 5000 is the first record. Then we have 2 with admin 4000. Last record you have is admin 2000. Okay, so you can have any combination like this. डिपार्टमेंट नेम को भी DESC और सैलरीज को भी DESC कर दोगे तो भी इट विल वर्क. सो यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन, दोनों असेंडिंग, दोनों डिसेंडिंग, या फिर एक असेंडिंग एंड एक डिसेंडिंग. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपको डेटा को किस तरीके से सॉर्ट करना है. नाउ लेट्स ट्राई टू राइट वन क्वेरी. गेट द info of IT employees in sorted order of their salaries. Simple. क्या query होगा? Read the question once and tell me the query. फेयर लगाना पड़ेगा. You have to add a where condition. So select star from this employee table. Where shall we add this where clause? यहाँ पे you will add this where you will say department name is equals to IT. Where to add this order by clause now? कहाँ पे add सैलरीज के इसके बाद एंड में सिंपल ऑर्डर बाय योर सैलरी. Okay, so this will help you fetch only the information of IT employees in ascending order of their salary values. So the point here is, if you are clubbing where an order by in a single query,
ऑर्डर बाय और वेयर कंडीशन एक क्वेरी में ऐड करते हो तो योर वेयर विल ऑलवेज कम्स बिफोर योर ऑर्डर बाय क्लॉज. ऑर्डर बाय हमेशा इट विल बी एट द एंड ऑफ द क्वेरी. मैम इसमें पैटर्न का यूज करके भी कर सकते हैं क्या शो? मतलब जैसे कि हमको सॉर्ट करना है EMP नेम के अकॉर्डिंग लास्ट के 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको असेंडिंग ऑर्डर No, हो no, सकता है. no, we cannot do that. You cannot give a pattern instead of a column name here. Okay. Okay. So that is your order by clause. Next clause we have is your distinct clause. Distinct clause का मतलब ही क्या है? It will help you fetch unique values from a column. किसी भी column की unique values अगर आपको fetch करनी है तो we can make use of this distinct clause. Now what happens when we say select department name from this employee table? How many rows and how many columns will be there in the output? जितने डिपार्टमेंट है उतने तो आएंगे. हाँ. So basically all the rows but only one column. All the rows, one column. Correct. So our output will look something like this, but we can see that one department name value is repeated in multiple rows of the table. तो वो duplicate हो रहा है. अभी हमें क्या करना है? Instead of selecting all department names, instead of selecting just the department names, हमें क्या fetch करना है या फिर क्या read करना है? I want to read unique department names from this employee table. Okay, and for that what do we have is this distinct clause. So if you have concentrated on my previous statement, can you tell me where to add this distinct clause in a query? एंड में ऐड करेंगे. डिपार्टमेंट नेम. कहाँ पे ऐड करेंगे? डिपार्टमेंट नेम के बाद. ऑर्डर बाय के पहले. डिपार्टमेंट के नहीं. Okay. Here in this query, what we are saying, select department name from employee. Instead हमें क्या बोलना है? Select unique department names from this employee table. तो कहाँ पे ऐड करोगे? Select distinct department name from this your table. Okay. So what it will do simply is it will help you fetch unique department names from the employee table we have. Okay, so this way we can fetch unique values of a single column also. But what if this is your employee table, the entire employee table. Now my requirement is, okay, we will just sort it based on department name values. अभी हमें क्या करना है? I want to remove duplicates if these values are being repeated. So department name admin hai and salary. Okay, so if you look at 4 rows of your department table, admin 4000 you have, then you have again admin 4000, admin 2000, and then you have admin 5000. Okay, so this is the data we have, and the output I want to have is, the result I am looking for is this. I just want to see unique, I just want to see a row where this combination stands unique. So admin 4000 is there in your table in 2 rows. तो ये combination जो है वो यहाँ पे duplicate हो रहा है. उसमें से यूनिक वैल्यू को हमें फेच करना है. सो देयर वर 4 रिकॉर्ड्स अर्लियर, बट क्योंकि एडमिन 4000 दिस कॉम्बिनेशन वाज प्रेजेंट ट्वाइस,
I just want to see only one out of those two records. Okay, got it? यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम्स सारे के सारे जितने भी डुप्लीकेट्स हो रहे थे उसमें से हमने सिर्फ एक एक यूनिक डिपार्टमेंट नेम वैल्यू रीड करी, बट अभी मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट नेम अलोंग विद द सैलरी वैल्यू, वो कॉम्बिनेशन अगर यूनिक है तो आई वांट टू फेच दैट कॉम्बिनेशन इन माय आउटपुट. आई जस्ट वांट टू फेच यूनिक कॉम्बिनेशंस इन माय आउटपुट. तो व्हाट क्वेरी वी विल राइट इज सिलेक्ट डिस्टिंक्ट. अभी सिर्फ डिपार्टमेंट नेम के डिस्टिंक्ट वैल्यूज फेच नहीं करने, we want to fetch the distinct combination, that is department name or salary from employee. Okay, तो जैसे ऑर्डर बाय में मल्टीपल, हाँ पैरेंथेसिस डिस्टिंक्ट मतलब दोनों पे लग रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं. ऑर्डर बाय में हमने दो कॉलम्स ऐड किए, तो डिड वी गिव अ पैरेंथेसिस? नो, राइट? तो यहाँ पे भी पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है. You just need to say select distinct these two column names from your employee table. So what will happen is, okay, let's just sort this data based on department name values again, so that we will be able to understand. So if you see admin 2000, admin 4000 is there actually twice in your table, but अभी यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? Only once, because what we have said is select distinct department name and salary. तो ये कॉम्बिनेशन में से यूनिक वैल्यूज आपकी फेच होंगी. नाउ इफ दैट्स द केस एंड आई हैव, लेकिन डिपार्टमेंट के यूनिक वैल्यूज नहीं ना फेस हो रहे मैडम. दैट्स व्हाट ना कि ओके, सो व्हेन यू से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम, सिंपल है, एक ही कॉलम की यूनिक वैल्यूज आप फेच कर रहे हो. बट व्हेन यू से डिस्टिंक्ट ऑफ डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, तो डेटाबेस क्या करेगा, अगर ये कॉम्बिनेशन यूनिक है तो ही, ओके, इट विल जस्ट रिमूव द डुप्लीकेट्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज. ओके, तो अभी ऐसे हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई दो एम्प्लॉइज हैं आपकी कंपनी में, वन इज दिस 1001, 1002, उसका भी नाम क्या है? रोहित है. ओके, एंड दिस रिकॉर्ड इज प्रेजेंट ट्वाइस. अभी इसमें से हमें कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे आउटपुट में, अगर हमें सारे एम्प्लॉइज का डेटा देखना है तो? First two, right? We do not want to see this record twice, 1002 and Rohit. Correct? But यहाँ पे it is not possible, but I'm just saying कि अगर 1002 नेहा है, एम्प्लॉय आईडी 1002 है, बट उस एम्प्लॉय का नाम नेहा है, तो हमें ये वाला रिकॉर्ड भी हमारे आउटपुट में चाहिए रहेगा, राइट? क्योंकि दिस इज सम डिफरेंट एम्प्लॉय एंड दिस इज सम डिफरेंट एम्प्लॉय. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस आल्सो. व्हाट आई वाज राइटिंग हियर. ओके, सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है. व्हेन यू हैव सिंगल कॉलम इन डिस्टिंक्ट क्लॉज, तो सिर्फ उस कॉलम की यूनिक वैल्यूज फेच होंगी. व्हेन यू हैव टू कॉलम्स इन योर डिस्टिंक्ट क्लॉज, तो ये दोनों कॉलम्स की कॉम्बिनेशन अगर यूनिक है तो वो कॉम्बिनेशन आपके आउटपुट में दिखेगी. सो बेसिकली दिस डिस्टिंक्ट क्लॉज विल बी अप्लाइड ऑन बोथ द कॉलम्स, बट नॉट सेपरेटली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now if that's the case and I have data something like this, okay, so I have my data 101 Mohan admin and 4000, and this same row is present multiple times. Entire row is being duplicated here. पूरा का पूरा रो अगर यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है
एंड इसमें से मुझे बस यूनिक रो को फेच करना है. सो व्हाट क्वेरी वी विल हैव टू राइट? Distinct star. Correct. Okay. Distinct. You can either have all the column names also. जैसे हमने ऊपर सिर्फ डिपार्टमेंट नेम और सैलरी के कॉम्बिनेशन को चेक किया, वैसे अभी हमें क्या करना है, ये चारों का वैल्यू अगर सेम सेम आ रहा है सारे रोज में, तो उसमें से हमें यूनिक वैल्यू फेच करनी है. सो यू may add all the column names here after your distinct clause. So employee ID, name, department name, and salary from this employee table. तो अगर ऐसा डेटा आपके टेबल में है, उसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज आप फेच कर पाओगे. एंड एज दीज आर ओनली द कॉलम्स यू हैव इन योर एंटायर टेबल, इतने ही कॉलम्स है आपके टेबल में जिस पे आपको यूनिक या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यूज फेच करनी है, तो यू कैन सिंपली रिप्लेस ऑल द कॉलम नेम्स विथ स्टार ओवर हियर. ओके, सो दिस डिस्टिंक्ट क्लॉज वी कैन सिंपली से कि अगर आप वो एक वैल्यू पे एक कॉलम पे अप्लाई करते हो तो इट विल हेल्प यू फेच यूनिक वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम. दो या उससे ज्यादा कॉलम्स पे अप्लाई करते हो तो इट विल हेल्प यू फेच यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ द वैल्यूज यू हैव ऑन फॉर दोस कॉलम्स. और अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड फेच करना है, सो these queries will be used to fetch unique record or a row. So basically this is a row of your table, right? इसमें से अगर यूनिक रो को फेच करना है, यूनिक रिकॉर्ड को फेच करना है, so we can write this simple query, that is select distinct of star from your employee data table. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next clause we have to see is your limit clause. Okay, so the use of this limit clause is to limit the number of rows in the output. So when I say this, okay, we do have one more clause which limits the number of rows in the output, which affects the number of rows we are going to have in the output. Which is that clause? ऐसा कौन सा क्लॉज है जो आउटपुट के नंबर ऑफ रोज को अफेक्ट करता है, जो हमने सीखा है ऑलरेडी? वेयर. ओके, सो वेयर विल व्हाट कैन से लिमिट द नंबर ऑफ रोज इन द आउटपुट. बट वेयर अगर आपको ऐड करना है तो what we have to do, we have to put a condition, and for that, to put that condition, we need to know about the columns and the data we have in those columns. So what kind of where conditions we put? Department name is equals to this, salary between this. So for that, we need to know about the columns you have in your table. Also, you need to know about the values or the data you have in those columns. So where will help you limit the number of rows in the output based on a condition. But what if I do not, okay, what if I am visiting that table for the first time? I do not know what all columns I have in it, और उस कॉलम में किस टाइप का डेटा है, क्या डेटा है वो भी मुझे पता नहीं है. बट दैट टेबल इज अ वेरी ह्यूज टेबल, इट हैज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स. बट अभी मेरा रिक्वायरमेंट है, आई जस्ट वांट टू सी few sample records, few top records of that table. Okay, उस टेबल के सिर्फ टॉप 5 टॉप 10 ऐसे रिकॉर्ड्स अगर मुझे देखने हैं, and I'm not aware of the columns, I'm not aware of the data I have in that table, in this scenario this limit clause will help us. So basically this limit clause accepts two parameters. पहला है आपका offset,
एंड दूसरा पैरामीटर है आपका नंबर ऑफ रोज टू रीड. So this offset means, so limit will always work from the top of your table. Okay, top as in the first record of your table. यहीं से आपका limit work करेगा. Now what does this offset means is number of rows to skip. That means आपको top से कितने रिकॉर्ड्स स्किप करने हैं, दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट वैल्यू वी नीड टू पास टू दिस लिमिट क्लॉज. और सेकेंड पैरामीटर क्या है आपका, नंबर ऑफ रोज टू रीड. तो इतने रोज स्किप करने के बाद आपको कितने रोज को रीड करना है, दैट इज योर सेकेंड पैरामीटर. नाउ व्हाट इफ आई हैव टू रीड टॉप 5 रोज ऑफ द टेबल. टॉप 5 रोज रीड करने हैं, दैट मीन्स हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आई एक्चुअली वांट टू स्किप फ्रॉम टॉप. कितने रिकॉर्ड्स को स्किप करना है, 0. एंड हाउ मेनी रोज वी वांट टू रीड, 5 रोज. ओके, सो एंड दिस लिमिट क्लॉज इज समथिंग which will be at the end of your query. That means after, even after your order by clause. अगर आप order by और limit को combine करते हो तो आपका limit order by के बाद आएगा. जैसे मैंने बोला order by clause के बाद सिर्फ और सिर्फ एक clause add किया जा सकता है, that is this limit clause. अभी के लिए we will just try to read top 5 records of this employee table. Now this simple query will give you all the records, but we want to limit this output to only 5 rows. Okay, now you can specify this 0 कि 0 records को skip करना है, उसके बाद हमें 5 records को read करना है. So which all records this query is giving us, top 5, 101 से लेके 105 तक. Now you can also skip writing the offset value whenever you are trying to read top n records of the table. So you can also pass a single parameter to this limit clause, and both of these queries will give you the same output. दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, टॉप से 0 रिकॉर्ड्स को स्किप कर रहे हैं, उसके बाद we are trying to read these 5 records. So we can say that the default value for offset is 0. Okay. So you can either specify it or you can skip specifying the offset value in case you want to read top n records of the table. अभी top स्लाइसिंग जैसा ही है ना मैम, हाँ पाइथन के स्लाइसिंग जैसा. करेक्ट. ओके, अभी अगर हमें टॉप 10 रिकॉर्ड्स को रीड करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लिमिट में क्या वैल्यू आएगा, 0,10 या फिर सिर्फ 10. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू रीड रोज फ्रॉम 5 to 10. 5th रिकॉर्ड से लेके 10th रिकॉर्ड तक के रोज हमें रीड करने हैं. तो 5th रिकॉर्ड से लेके रीड करना है, तो हाउ मेनी रोज एक्चुअली वी वांट टू स्किप, नहीं, 5th रिकॉर्ड हमें हमारे आउटपुट में चाहिए. ओके, 5th से लेके 10th तक चाहिए, तो कितने रिकॉर्ड्स को स्किप करना है, 4 रिकॉर्ड्स को स्किप करना है. एंड हाउ मेनी रोज वी वांट टू रीड, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 6 records. Okay, same way if you want to read rows from 9 to 15, तो आपकी लिमिट में वैल्यूज क्या आएंगी, 8, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. Okay, so this way your limit clause works. It will help you read n number of rows of your table. Top n rows are
a range of rows of your table without any condition. You can just put a limit on the number of rows you want to see in the output. Now what if I have to read seventh record को read करना है तो 6,1. So limit will have, let's start from your employee table limit. 6 rows को हमें skip करना है. कितने rows हमें read करने हैं? Only one, which is the 7th row of your table. Now, what if I want to read second highest salary of the table? 1,1. 1,1 तो आएगा, but now what if you are just putting 1,1 your limit class? Select star from employee, limit 1,1 अगर करते हैं ऑर्डर करना पड़ेगा। ये हमें Order data को sort करना पड़ेगा. So Order by order by descending. salary descending, then limit 1,1, so it will give you the second highest salary of your table. So let's just sort the data. Will not apply this limit first. So salary DESC अगर आप करते हो तो this is the second highest salary you have in your table. Now what will be the query to fetch third highest salary? 2,1. Okay, And same but 2,1. Let's execute this. What is the value we are getting? 8,000. ये निकालना पड़ेगा। Correct. It's not the correct third highest salary value. ये सिर्फ क्योंकि लिमिट क्या करता है? It doesn't go and check for the values you have. It just checks for the row number. और अभी इसे थर्ड नंबर पे रो कौन सा मिल रहा है? 8,000 वाला ही. Okay. And that is why you cannot use star in the select statement. Unique values, unique salary values को consider करना पड़ेगा to get the correct highest salaries from a table. And how to do that? Select distinct salary from your employee table, and then you have your limit clause which will give you the correct third highest salary or any nth highest salary from a table. Okay, so this is the more correct query to fetch the nth highest salary, because if you have, and obviously you will have duplicate values in the salary field. तो मैम अगर बाकी कॉलम्स भी चाहिए होंगे तो वो इससे पहले लिखने पड़ेंगे? नहीं, Itself. no, you cannot do that. उसके लिए you have to write a subquery. So if you want to see this entire record, you need to add an outer query. Okay, we will talk about it जब हम subquery सीखेंगे, ठीक है? But for that, if you want to see the entire record for this particular salary value, ऐसे सारे records अगर आपको देखने हैं जहाँ पे salary का value 7,000 है, we will have to add a subquery. Okay. मैम ये लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज. Okay. When we executed this query, what is the third highest salary value we are getting? 8,000. But अगर आप अपनी डेटा को देखेंगे तो which is the third highest salary? 7,000. क्यों? क्योंकि this 8,000 is there for 4 employees. Okay, और आपका लिमिट क्या करता है? वो कभी भी वैल्यू को चेक नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रो नंबर के बेसिस पे आपको आउटपुट देता है. करेक्ट? एंड दैट इज व्हाई here in this query we just got the salary value 8,000, which is the third row of your table. Now if you see, ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है, एम्प्लॉय का नाम क्या है? It is Ibrahim. But if you see this output, what is the third record you have? Corey. But what we are getting? Ibrahim. And that is because when you combine order by with your limit clause, it changes the order of the records wherein you have
same values. Order by में ओके जिस भी कॉलम के बेसिस पे आप आपका डेटा सॉर्ट कर रहे हो उस कॉलम में अगर सेम वैल्यूज है इन मल्टीपल रोज तो यू कैन हैव एनी ऑर्डर फॉर दीज 4. लेकिन उसके लिए कोई कुछ मतलब रूल नहीं है, कोई भी आ सकता है ऐसे हाँ सेम वैल्यू। हाँ it can be anything, okay, but any of these rows. Now if you do not want to change that order, आपको ऑर्डर इंटैक्ट रखना है, even if you add this limit you want to keep this order intact, what you need to do is you can simply add any column, any unique column. ऐसा कोई कॉलम आप आपकी ऑर्डर बाय क्लॉज में ऐड कर दीजिए जिसकी वैल्यूज यूनिक है. Oh, okay. MySQL mode incompatible with distinct. ठीक है. You cannot do it with this distinct. It says. तो यहाँ पे आप कर सकते हो order by के साथ you can have this employee ID to keep your order intact when you are adding this limit clause with your order by clause. But if you are adding this distinct, you cannot have a column in your order by clause which is not being used in your select clause. मतलब ऐसे कोई कॉलम पे आप डेटा को सॉर्ट नहीं कर सकते जो आपके आउटपुट में ही नहीं है. Okay, so a way this whenever we club limit and order by, your sequence will change the order of records. जहाँ पे salaries का value duplicate है वो कुछ भी आ सकता है and that's why we are getting यहाँ पे Corey is the third record, but when we are adding this limit to it, not this. We are getting this Ibrahim. Okay, that is because limit जब आप add करते हो तो आपका sequence जो है वो change हो जाता है. Okay, so that is your limit clause. We will stop here for today. This is your fifth class, right? Or fourth? Which day it is? 6. अयो, ठीक है. मैम डिस्ट्रिक्ट सैलरी की जगह अगर डिस्ट्रिक्ट स्टार कर दें तो पूरा वैल्यू मिलेगा हमें? नहीं, तो डिस्टिंक्ट स्टार क्या करता है एक्चुअली, अगर पूरा रिकॉर्ड आपका डुप्लीकेट है उसमें से यूनिक रिकॉर्ड को फेच करेगा. ओके, तो भी आपका क्या होगा, सारी ही वैल्यूज कंसिडर, सारी ही सैलरी वैल्यूज कंसिडर होंगी इन दैट केस ऑल्सो. हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सब क्वेरी ही लिखना पड़ेगा. ओके मैम वो जो 1 to many का रिलेशनशिप था उसको एक बार फ्लिप करेंगे. 1 to many का रिलेशनशिप था, उसमें क्या चाहिए, मतलब वो रिलेशनशिप ही एक बार देखें. इन अनदर एग्जाम्पल और इन दिस एग्जाम्पल? नहीं, सेम आपने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया उसको बस रिवाइज एक बार. अच्छा, ओके. 1 to many रिलेशनशिप सिंपली क्या है, ओके ओके, फॉरगेट अबाउट दिस, वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली. ओके, कि एक स्टूडेंट ऐसे हो सकता है, राइट, 101 कोई स्टूडेंट है हमारी क्लास में, ये उसकी डिटेल्स हैं, एंड दैट स्टूडेंट is doing a data science course. Abhi, the same student, like all of you are learning data science as well as SQL, correct? और SQL के लिए यहाँ पे आपके कोर्स टेबल में एक अलग रिकॉर्ड दिया है 11 SQL. Now this particular student is doing both of these classes. So what I have to keep here in my course table, I have to keep 2 records for this one student. डेटा साइंस के लिए एक और एसक्यूएल के लिए एक. सो दैट मीन्स एक स्टूडेंट इज डूइंग मल्टीपल कोर्सेस. अ रो of the student table, a single row of the student table is related to multiple rows of this
course table, and that is your one to many relationship. Abhi, if you can, okay, we can take an example of this employee and project table also. Employee ID है आपका, employee name you have, and you have this project table जहाँ पे आपका है project ID and project name. Okay, so this is the employee you have in your company जो कि ETL project पे भी काम कर रहा है, and he is also working on migration project. So same employee is working on two of the projects, and to define that relationship you need to have this employee ID over here, and what values will come here in this column 1001 or 1001. तो इस केस में भी क्या हो रहा है, an employee, a single employee is working on multiple projects. That is again your one to many relationship. जो हमने यहाँ पे भी देखा, राइट, एक एम्प्लॉय जो है दैट इज दिस E1 is working on data migration as well as on ETL, and we said that this is your one to many relationship, correct? समझ लगा? many to one अगर हम करेंगे तो So one to many and many to one are one and the same thing. Okay, इस टेबल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ की एक रो इज रिलेटेड टू मल्टीपल रोज ऑफ प्रोजेक्ट टेबल, वो हो गया आपका वन टू मेनी रिलेशनशिप. बट अगर इस टेबल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो क्या होगा, मेनी टू वन, राइट. यहाँ के मल्टीपल रोज आर रिलेटेड टू सिंगल रो ऑफ दिस एम्प्लॉय, okay. है ना. सो दैट्स नथिंग डिफरेंट. वन टू मेनी और मेनी टू वन सेम ही बात है. कौन से टेबल के पर्सपेक्टिव से आप उसे देख रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन? नो मैम. ठीक है, चलो फिर वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. वी विल कनेक्ट टुमारो एट द सेम टाइम टू डिस्कस फर्दर थिंग्स. ओके, थैंक यू ऑल. गुड नाइट. Good night, Good night, ma'am. ma'am. Good night.